Hi guys, in this session we take the next chapter of your FA6 and the name of the chapter is Final Accounts of Banking Companies. Final Accounts of Banking Companies. Now, all of us, whether individuals or small businessmen or companies, corporates, all of us have bank account. You all know what type of activities takes place when we open an account in bank. क्या होता है? We open an account in bank, we put our money whenever we want, we withdraw. Till the time money is in bank, we get interest. Of course, interest is on saving account, fixed deposits, not on current account. You all know very well concept of overdraft. Overdraft is given only when there is an account in the name of business. In short, basic banking transactions, you all know how it goes through. Deposit of money, withdrawal of money, payment by check, receive by check. Nowadays, more of online transactions takes place. So these are the basic transactions which are undertaken on a day-to-day basis by all banks. Now here we are going to study a bit in detail how these transactions are done. But the syllabus what is there is, I won't say pure basic, a little bit higher than the basic, but not very much in detail what is there in practical life. Because अगर उतना करोगे तो तुम्हारा एक पूरा सब्जेक्ट ही बैंकिंग के ऊपर जाएगा, not one chapter. Okay. Now coming to your syllabus, final accounts of banking company. The name final accounts is there. So one thing is very clear, final accounts banana ही है. You all know, you all are doing FA6 से final accounts, trading P&L balance sheet. But this is bank. Bank comes under service sector. Bank doesn't buy and sell goods. Bank का काम है to provide services. Bank doesn't buy and sell goods. Bank का काम है to provide services. So, instead of trading account, बैंक में बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. बैंक के केस में इनकम स्टेटमेंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. That too we have to do, but before that, before we come to the stage of final accounts, there are more small parts which are connected with banking and restricted to the extent of your syllabus. सबसे पहला, what I am going to do in this session, bill discounting. Bill discounting क्या होता है? Come to that in some time. Bill discounting का part is the first part where your syllabus starts as far as this chapter is concerned. Then you have recognition of income. That means how much income is to be credited to your P&L considering the performance of considering performing assets and non-performing assets. That I'll be taking at a later stage. Then there is provision for doubtful debts and उसके बाद final accounts का part will start. And final accounts के part में कैसे रहेगा? First, you'll have separate sums on balance sheet, separate sums on P&L, and then combine P&L and balance sheet along with adjustment. So this is what is your syllabus as far as your undergrad level is concerned. I'll repeat. First, it starts with bill discounting, which I am going to do today. Second will be recognition of income in P&L. That means there's a concept of performing assets and non-performing assets. After completing the first part, I will get into that. And there are small sums where there is a different concept. Everything cannot be credited as an income to your P&L depending upon whether it is performing asset or non-performing. बाद में देखेंगे. Then there is provision for doubtful debts. There are certain percentages of advances. What are advances? That also we'll slowly get into that. Then only P&L, only balance sheet,
and combine sums on balance sheet and P&L. Got it? So this is your syllabus. Now coming to the first part, what I am going to start today, and I am going to take one sum of that. This will be a bit longer session, एक आध घंटा जाएगा, but understand the concept clearly, because ये जो मैं sum करूंगा, before that of course I'll explain you the sum what I'm going to do today. If you get that sum, समझो 80% of the first part you have got it. Okay, so the part what I'm going to start today is of bill discounting. You all have done it in SYJC. You all have done the concept of bill discounting in the chapter bills of exchange in SYJC. You have to do the same thing, but what we did in SYJC was from a customer point of view. जो SYJC में किया था, that was from a customer point of view. Now we have to do from the bank point of view. Okay. Now first of all, to brush up, if you all have forgotten, bill discounting होता क्या है? First, let's keep aside bank for 2 minutes. A businessman will draw a bill of exchange on his customer. A businessman will draw a bill of exchange on his customer. Say for example, Mr. A draws a bill on Mr. B. The amount of bill is 1 lakh. Okay, the amount of bill is 1 lakh. बिल का पीरियड है 3 months. बिल का पीरियड है 3 months. Now A has drawn a bill on B for 1 lakh. Period of bill is 3 months. B का liability आएगा after 3 months. B will pay to A after 3 months. Understand the concept. B will pay to A after 3 months. Now A को पता है कि मुझे B से पैसा मिलेगा 1 लाख रुपीस, बट वो आज नहीं मिलेगा, वो मुझे मिलेगा 3 महीने के बाद. Now A is in need of money. A is in need of money today. So वो क्या करेगा? पहले B को अप्रोच करेगा. Well, I've done in SYJC the concept of retirement. B को अप्रोच करेगा, देख भाई मुझे तेरे से 1 लाख रुपया लेना है आफ्टर 3 months. आर यू विलिंग टू गिव मी टुडे? अगर तू मुझे आज देता है तो मैं तुझे 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ. बी बोलेगा आई एम इंटरेस्टेड इन डिस्काउंट भाई, बट मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है. तू टेंशन मत ले. बी इज टेलिंग टू ए, 3 महीने के बाद मैं तेरे को पूरा 1 लाख दे दूंगा, बट सॉरी यार, आई डोंट हैव मनी टुडे. नाउ ए कैन नॉट फोर्स बी बिकॉज the commitment is to pay after 3 months. B cannot force A cannot force B because the commitment is to pay after 3 months. So A बोलेगा ठीक है, I don't have hopes from B. Now what I'll do? A will think now on the concept of discounting. What A will do? ये जो 1 लाख का बिल है, ये जो 1 लाख का बिल है, वो बिल बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लेके जाएगा एंड ही विल गेट द बिल डिस्काउंटेड. ही विल गेट द बिल डिस्काउंटेड. सो क्या होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज का एंट्री तो ऑलरेडी पास कर दिया. 1 लाख का बिल है. When he drew the bill, वो SYJC का, let's not get into the, he must have passed the entry in his books. Bills receivable account debit to B's account. Okay? ये सब हो गया.
Now, when he got the bill from B, he debited bills receivable. Now, he will go to the bank and get this bill discounted. So, in the books of A, he will get the money from bank. A को बैंक से पैसा मिलेगा तो he will debit bank account. Now, bank is not a fool to give the money like that only to A. बैंक का भी business है. Discounting is a part of their day-to-day activity. तो बैंक क्या करेगा? They will charge A something. Let's take an example. बैंक ने A को चार्ज किया 2000 रुपया. तो जहां बैंक को A को 1 लाख रुपया देना है, उसके लिए A has discounted. सो बैंक क्या करेगा? इमीडिएटली आज के दिन पे ही A को पैसा दे देगा. दैट इज डिस्काउंटिंग. एंड फॉर दैट आई एम अज्यूमिंग बैंक चार्जेस 2000. सो बैंक क्या करेगा? इंस्टेड ऑफ पेइंग पूरा 1 लाख, 1 लाख में से 2000 उसका चार्जेस काटेगा. सो ए के हाथ में जाएगा 98,000. नाउ जो पैसा 3 महीने के बाद ए को मिलने वाला था, जो पैसा 3 महीने के बाद ए को मिलने वाला था, आज मिला 98,000. सो ए हैज स्पेंट 2000 फॉर यूजिंग द मनी 3 मंथ्स के लिए. जो पैसा उसको 3 महीने के बाद मिलने वाला था, वो आज मिल रहा है. सो ही इज एंजॉइंग द मनी फॉर 3 मंथ्स. फॉर दैट एंजॉयमेंट ऑफ 1 लाख रुपी, he has spent 2000, which for him is an expense towards discount, and he has to pay, he has to give the bill to the bank. So the bill goes out, so he will credit bills receivable. He will credit bills receivable. Getting it? So A क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट 98,000, डिस्काउंट डेबिट 2000, एंड बिल वो बैंक को देगा. सो 2BR 1 लाख. हमने ये ट्रांजैक्शंस राइट नाउ व्हाट वी डिस्कस फ्रॉम A's पॉइंट ऑफ व्यू. Same thing now we have to think from bank's point of view. Now listen, understand. बैंक ने ए को दिया, ए को मिला. ए को मिला कभी मिला? जब भी बैंक ने दिया. आई जस्ट टेक अ डिफरेंट पेन. नाउ सी, सेम एंट्री. बैंक डेबिट हुआ, ए गॉट द मनी फ्रॉम बैंक, बैंक हैज पेड. So bank will credit bank account by 98. See, when I say bank, matlab bank also has accounts with other banks, with their branches. So उनके लिए भी, although it is bank, उनके लिए भी bank account होता है. So they will credit bank account by 98,000. Understand this entry? Yeah? They will credit bank account by 98. Now discount A के लिए expense था, बैंक ने उसको चार्ज किया, तो बैंक के लिए इनकम हो गया. ए के लिए एक्सपेंस था, डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस. बैंक के लिए इनकम है, क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम. सो टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड. To discount on bill discounted, that is the word normally bank uses. To discount on bill discounted, or you can say to discount on bill purchase. You can use that word, to discount on bill purchased. कोई लोग खाली डिस्काउंट लिखते हैं, but we'll use the to discount on bill purchase 2000, and A ने बैंक को दिया, तो A के साइड से गया, but bank is receiving, so bank will debit bill discounted and purchase account. Bill discounted and purchase account debit 1 lakh.
Getting it? So this is the entry which A will pass. This is the entry bank will pass. A के लिए रिसीप्ट, बैंक के लिए पेमेंट. A के लिए डिस्काउंट एक्सपेंस, बैंक के लिए डिस्काउंट इनकम. A has given the bill to bank, bank is receiving the bill. This is the basic thing what you have to understand. आज का जो सम कर रहा हूं उसमें there are 4 journal entries and 2 ledger accounts. But before we pass the journal entry, understanding of concept is important. जो 4 journal entry है उसमें से ये एंट्री है सेकंड वाला. फर्स्ट वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है, फोर्थ वाला क्या है, दैट आई विल कम इनटू दैट इन सम टाइम. बट फर्स्ट understanding this basic concept is important. Got it? So this is one main entry. This is one main entry. Got it, guys? So this transaction ka entry we have to pass from the bank's point of view. Got it? Clear with this? So this is one of the main transaction का entry. Now जैसे मैंने बोला फर्स्ट एंट्री क्या होगा, सेकेंड एंट्री क्या होगा, सॉरी सेकेंड तो हो गया, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, विल कम टू दैट इन सम टाइम. बट बिफोर वी पास द फर्स्ट एंट्री you should know that there is something called as rebate on bill discounted. There is something called as rebate on bill discounted. Now see, ये rebate क्या होता है? Okay, ये rebate क्या होता है? Understand, I will pass the entry here, but first understand the concept. ये तुम्हारी बैंक की इनकम है 2000 रुपया. नाउ आई एम जस्ट चेंजिंग द फिगर्स मतलब इसको मैंने चेंज कर रहा हूं. आई एम मेकिंग दिस एज रुपीज इन लैक्स. ये जो एक ट्रांजैक्शन था अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं पूरे साल का ट्रांजैक्शन है. सो दिस इज नॉट 2000, दिस इज 2000 लैक्स. नाउ लिसन, this is bank ka income. Understand this concept. This is bank ka income 2000. Now let's take financial year 2023-24 जो मैंने सम में भी रखा है. Now companies, normal corporates, banks, insurance, everybody follows financial year. Financial year means in this case starts from 1st April 24 and 1st April 23 and will end on 31st March 24. Now listen, ये केस में पीरियड was 3 months, due date is 3 months, correct? Now there will be bills जो डिस्काउंटिंग हुआ है लेकिन उसका ड्यू डेट, सी माई ईयर इज गेटिंग ओवर ऑन 31st March 24. माई ईयर इज गेटिंग ओवर ऑन 31st March 24. नाउ देर आर फ्यू बिल्स जिसका ड्यू डेट 31st March 24 के बाद है. देर आर फ्यू बिल्स जिसका ड्यू डेट 31st March 24 के बाद है. दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर. 31st March 24 के बाद है, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर. सो ये जो 2000 है दैट ऑल्सो इंक्लूड्स पार्ट ऑफ द इनकम विच बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर विच इज येट टू कम. ये जो 2000 है दैट इंक्लूड्स अ पार्ट ऑफ डिस्काउंट विच इज एन इनकम फॉर द नेक्स्ट ईयर विच इज येट टू कम. सो वो इनकम हमारे करंट ईयर का नहीं है,
वो नेक्स्ट ईयर का है। तो वो जो इनकम है which belongs to the next year, that we call it as rebate on bill discounted. That we call it as rebate on bill discounted. So in short, rebate on bill discounted for this chapter would mean discount what I have received during the year, but it doesn't belong to the current year. It belongs to the next year, which is yet to come. It belongs to the next year, which is yet to come. तो क्या करना है, वो हमें कैलकुलेट करना है. When I start the sum, we have to start with calculation of rebate. Now what I am doing, I am assuming 2000 में से 500 रुपया नेक्स्ट ईयर का है, 2000 lakhs में से 500 belongs to the next year which is yet to come. Now listen, so 2000 में से 500 lakhs belongs to the next year, so remove it from here. Now I cannot cancel it. remove कैसे करोगे, मैंने डिस्काउंट को क्रेडिट किया है. So now what I will do, I will debit discount, that is discount on bill purchased or discount on bill discounted, that is 500, and I will credit rebate on bill discounted. I will credit rebate on bill discounted, that is 500. So क्या होगा, now see, 2000 which includes income of current year as well as next year. 500 is the income of next year. So 2000 मैंने क्रेडिट किया, 500 मैंने डेबिट किया. So my net current year का income is 1500. कैसे 1500? 2000 total income, 500 belongs to the next year which is yet to come. So 2000 minus 500, 1500 will be my income for the current year, which I will transfer it to my P&L. So now what will happen? On the last day of the year, 31st March 24, on the last day of the year, 31st March 24, my net income towards discount, 2000 minus 500, that is 1500, I will debit discount on bill discounted. Right now don't go in the word, just understand the concept. मैं पूरा sum systematic करूंगा after I finish the explanation. That will be 1500. ये 1500 कैसे आया, 2000 minus 500. okay, now see, 2000 का credit, 500 का debit, 1500 का debit, and this is my income which you all have done, you all are doing it since FYJC. You will credit P&L by 1500. You will credit P&L by 1500. So discount on bill discounted account debit 1500 to profit and loss account, that is 1500. So see now, 2000 का credit, 500 का debit, 1500 का debit, discount account tallies, and my P&L shows 1500. Got it? Clear? So see, now understand. This was my second entry. This is my third entry. This is my fourth entry. So now तुम लोग बोलेगे सर फर्स्ट एंट्री किधर है? Now to understand the first entry, you should know this concept. Concept समझा? Now listen. Now understand. ये एंट्री हमने क्यों पास की? Because 500 is the income for the next year. So now guys, what will happen? When I go to the next year, first day of the next year,
ये जो रिबेट था, जो मैंने डिस्काउंट डेबिट करके रिबेट को क्रेडिट किया, नाउ आई विल रिवर्स बिकॉज दिस 500 बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर. नाउ आई हैव कम इन द नेक्स्ट ईयर. सो ये जो 500 है, ये मेरा करंट ईयर का इनकम है. सो आई विल credit discount on bill discounted and purchase, that is 500 और rebate को credit किया है. So now I will debit rebate on bill discounted. Now I will debit rebate on bill discounted. Got it? So यही entry, third entry, next year when I go, I will reverse it and that becomes my first entry. So when we start the sum, we have to start with this entry. अगर ये concept तुमको पता ही नहीं है, you will not be able to do this entry. Got it? I'll show you the logic. Why? Because 2000 में से 500 belongs to the next year. तो मैंने यहां से डिस्काउंट को डेबिट करके रिबेट को क्रेडिट किया, बिकॉज ये 500 नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंट है. नाउ आई हैव कम्ड इन द नेक्स्ट ईयर. मैं नेक्स्ट ईयर में आ गया हूं. आई हैव गॉन इन द नेक्स्ट ईयर. सो फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर आई विल रिवर्स दिस एंट्री एंड आई विल टेक इट एज एन इनकम ऑफ द करंट ईयर. So when I go in the next year, this will be my first entry, and then second, third, fourth becomes normal. Got it? Don't worry. 60-70%, 50% तक भी समझा. When the sum comes, it will become very clear. Got it, guys? तो अभी वो मैं जो sum करूंगा उसमें करना क्या है? You have to pass these 4 entries. You have to prepare 2 ledger accounts, which is very simple. You have to just pass, you have to post according to the entries, and एक अकाउंट में बैलेंस है वो देखेंगे. बट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहां पे मैंने तुमको बताया, आई हैव अज्यूम 2000 में से 500 इज माय रीबेट. रीबेट का फिगर तुम्हें कैलकुलेट करना है. दे विल गिव यू लास्ट ईयर का रीबेट, बट करंट ईयर का you will have to calculate. So how to calculate that? The sum will start with that. The sum will be in 3 parts. First, we have to calculate rebate on discounted, rebate on bill discounted. जो ये 500 मैंने तुम्हें डायरेक्टली बताया, ये 500 आया कैसे, सबसे पहले वो कैलकुलेट करना है. Then 4 journal entries. And after that, on the basis of entries, 2 ledger accounts. Okay, I'll just be back with the format so I don't waste time in recording. Okay, I'll just be back and then we will see in detail how to solve. I've given you the base. Okay guys, continuing with the extra sum. You all have that sum in front of you. See that? Let's read the sum. Following information is available from the books of National Bank Ltd as on 31st March 24. They have given you full year ka transaction. During the entire year, how much was the amount of bill discounted and purchased? That is 1,37,05,000. Rebate on bill discounted on 31st March 23. This is last year का rebate. जो मैंने तुम लोग को लास्ट एंट्री में समझाया. विल सी व्हेन वी कम टू द जर्नल. डिस्काउंट रिसीव 1056,650. दिस इज द डिस्काउंट फॉर द एंटायर ईयर. नाउ सी द डिटेल्स ऑफ बिल डिस्काउंटेड आर एज फॉलोज. दे हैव गिवन यू 4 अमाउंट ऑफ बिल, ड्यू डेट दिया एंड द रेट ऑफ डिस्काउंट. दिस इज रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द रीबेट. व्हाट आई टोल्ड यू, एग्जाम्पल में आई स्ट्रेट अवे गिव यू द फिगर ऑफ 500. Now we have to calculate what they have asked. Now see, they have given you amount of bill, due dates and the rate, and calculate rebate on bill discounted as on 31st March 24.
pass journal entries and prepare rebate on bill discounted and discount on bill discount. Three things. So first, let's calculate this. Then we will do the journal and then the ledger. When I come to the ledger, I change the angle of the camera. Okay, so the first thing is calculation of rebate on bill discounted on 31st March 24. We'll give the heading particulars and single column of amount. Particulars and amount. No need to prepare the table. Now guys, see, I'll repeat. Rebate on bill discounted कभी आता है? Rebate on bill discounted comes into picture when the due date of bill goes in the next year. Rebate comes into picture only when the due date goes in the next year. अभी देखो ये जो 4 बिल दिया है, my year ends on 31st March 24. My year ends on 31st March 24. See the due dates. The 4 due dates. 1st July, 10th July, 25th July, 1st August. All the dates, due dates are going beyond 31st March 24. अगर ड्यू डेट 31st March 24 के पहले है, then there is no question of discounting. That you will see in the later lectures. But right now, all the due dates, all the 4 bill का due date is after 31st March 24. So यहाँ पे rebate will be for all the bills. Understand the word, I am repeating the statement again. Rebate on bill discounting will come into picture only where the due date goes beyond 31st March 24. Beyond 31st March 24. Because जब भी मैं कैलकुलेट करूंगा ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना. ओके, चलो I'll repeat again. हेडिंग दे दो. This is the first part. You can call it as okay, जरूरत नहीं, just write calculation of rebate on bill discounted on 31st March 24, particulars and amount. 4 bill है. Let's take one by one. Now there is no name given, so what you will do? On the first bill का amount कितना है? First bill का amount 18,24,000. Okay, now see, rebate कैसे calculate करोगे? Rebate कैसे calculate करोगे? Put a bracket. Amount of bill is, I'm showing it in brackets, 18,25,000. Now see, due date 1st July, rate of discount 12%. So what you will do? Into the rate 12% into. Now guys, be careful. I'll repeat. Amount of bill into the rate of discount. चारों का अलग अलग है. इसका 12% है. Now see, इसका ड्यू डेट कभी है? इसका ड्यू डेट है 1st July. Now count. My year ends on 31st March 24. Due date is 1st July. Calculate days up to 1st July but after 31st March. 31st March खत्म हो गया. 1st July. Can I say April का 30? April का 30, May का 31, June का 30 and July क्या था? 1st. Okay, so 30, I'll repeat again. 31st March के बाद next month is April. पूरा April का 30 days, May का 31, 30 plus 31, 61, June का 30, 91 and July का 1 day, 92. So into 92 and divide by the number of days in a year. Now guys, be careful. 365 days in a year, but school का basic
Leap year has 366 days. This is 31st March 24. 2024 is a leap year. कैल्सी में डिवाइड करो, डिवाइड बाय 4. आई होप यू ऑल नो. अगर नहीं पता है, ईयर को 4 से डिवाइड करो. अगर एग्जैक्ट आंसर आया लीप ईयर, अगर पॉइंट्स में आया तो लीप ईयर नहीं है. 2016, 2020, 24, 2028, ऑल दिस विल बी लीप ईयर. 4 साल में एक बार आता है. कैल्सी में डिवाइड करो, 2024 को 4 से डिवाइड करो. देखो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, पॉइंट्स में नहीं आ रहा है. Therefore, leap year है, so you will divide by 366. So, I'll repeat. Amount of bill 18,25,000. Rate of discount 12%. Period of bill 92. Period means what? This the number of days which goes beyond 31st March, 92, and because it is leap year, divide by 366. अगर ये 24 की जगह 21, 22 या 23 होता, I would have taken 365. Okay, just a minute. I'll just get my calci. Sorry guys. So 18,25,000 into 12% divide by 366 into 92 gives me 55,049 rupees. I'll repeat guys. Bill का amount is 18,25,000. 12% का rate 92 days. 92 days कैसे आया? ड्यू डेट इज 1 जुलाई. 31 मार्च के बाद अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 1. सो 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 1 गिव्स यू 92 days. गॉट इट? चलो एग्जैक्टली सेम वे लेट्स टेक द नेक्स्ट बिल. डोंट वरी, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट बिल का अमाउंट इज 50 lakhs. So on rupees 50 lakhs, again we will put a bracket. 50 lakh into 50 lakh का रेट देखो कितना है, अगेन 12% है, into 10th जुलाई. अभी देखो 2 ways to calculate. 1 जुलाई तक 92 था, ये 10th है, अनदर 9 days. सो 92 में 9 ऐड करो, 101. अदर वे राउंड वापस कैलकुलेट करो. अप्रैल का 30 प्लस मई का 31 प्लस जून का 30 एंड जुलाई का 10. 101 and again leap year, so you will divide by 366. I'll repeat guys. Amount of bill into the rate of discount into 101 divide by 366. Let's calculate. 50 lakh का 12% divide by 366 into 101 gives you 165,574. gives you 165,574. 165,574. Clear guys? Got it? Chalo. Next. Third bill. 28,20,000 on rupees 28,20,000. Put a bracket. 28,20,000 into, now यहाँ पे the rate is 14%. ड्यू डेट 25 जुलाई, 10 तक आ गया तो another 15 days 116, और
कैलकुलेट करो वापस 31 मार्च के बाद 30 ऑफ अप्रैल 31 ऑफ जुलाई सॉरी 30 ऑफ अप्रैल 31 ऑफ मई 30 ऑफ जून एंड कितना है जुलाई का 25 ऑफ जुलाई सो दैट गिव्स यू 116 क्या बोला मैंने दूसरा वे 10th जुलाई तक 101 था 25th है another 15 days 101 plus 15 gives you 160 so 28,20,000 into now the rate is 14% divide by 366 into 160 gives you 1 lakh rounded up on 25,128. Let me check once again. 14% divided by 366 into 116. So 125, 128. And now on rupees 40 lakh 60,000 put a bracket same thing 40 lakh 60,000 into the rate is 16% into 1st August let's check अभी देखो 25 जुलाई तक आ गया तो डिफरेंस ऐड करो और नो कंफ्यूजन अगेन स्टार्ट 30 ऑफ अप्रैल रिमेंबर आफ्टर 31st मार्च अप्रैल का पूरा 30 मई का 31 जून का 30 जुलाई का 31 एंड अगस्त का एक दिन सो 123 डिवाइड बाय 366 40 lakh 60,000 into 16% divide by 366 into 123 gives you 2,18,308 218,308 got it so take the amount of bill into the rate of discount divide by 366 and into the number of days and the number of days will be after 31st March from 1st April till the due date. Got it? Now take iska total 55,049 plus 165,574 plus 125,128 plus 218,308 gives you 564,059 gives you 564,059 so my current year ka rebate is 564,059 that means see the concept question में देखो ऊपर डिस्काउंट कितना दिया है can you see that discount received 1056,650 जो मैंने एग्जाम्पल दिया था 1050 considering this sum total discount is 1056,650 लेकिन वो 1056,650 में से 564,059 is the discount for the next year which is yet to come so this is my rebate discount received in advance which I will have to adjust. Again I'll repeat rebate on bill discounting means next year का discount जो current year में मैंने लिया है it belongs to the next year so I will remove when I record the entries for the current year. Got it guys? Clear? Keep that in mind. Now let's come to the journal. Let me check the angle of the mobile. Yeah, it's fine. Let us come to the journal. What I told you, आज के sum में 4 entries. आगे जाके there are couple of sums where there are more entries, but let's focus on this one. My year ends on 31st March 24. That means my first day of the year is 1st April 23. My first day of the year is 1st April 23. Financial year ends on 31st March 24. Now what I told you,
इन द एग्जाम्पल ये मेरा रिबेट करंट ईयर का है, जो इनकम नेक्स्ट ईयर का होगा जो अभी तक आया नहीं है। नाउ कैन यू सी द क्वेश्चन, सेकेंड अमाउंट देखो, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31st March 23 221,600। अंडरस्टैंड नाउ, ये 221,600 मेरी करंट ईयर की इनकम है जो मुझे लास्ट ईयर मिली थी। तो अगर ये मैंने लास्ट ईयर का कैलकुलेट किया तो उसका अमाउंट था 221,600। सो 221,600 यही कैलकुलेशन लास्ट ईयर का है जो मेरी करंट ईयर की इनकम है। सो व्हाट आई टोल्ड यू, यू याद है मैंने एक्सप्लेन किया, you will start with reversal of entry number 3. What you will do? 221,600 is my current year ka discount. Now understand. So what I will do? First I am writing credit. So I will credit discount on bill discounted account, that is 221,600, and लास्ट ईयर मैंने उसको रीबेट में क्रेडिट किया था। लास्ट ईयर मैंने रीबेट में क्रेडिट किया था। डोंट वरी, व्हेन आई कम टू द थर्ड एंट्री ना तुम्हारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। तो लास्ट ईयर मैंने रीबेट में क्रेडिट किया था। सो नाउ इन द करंट ईयर आई विल डेबिट। सो आई विल डेबिट rebate on bill discounted account 221,600। लास्ट ईयर मैंने क्या एंट्री पास की थी? डिस्काउंट टू रीबेट। अगेन थर्ड एंट्री में जब आऊंगा इन डिटेल करूंगा जैसे मैंने बोला। सो राइट नाउ दिस इज माय एंट्री फॉर द सॉरी दिस इज माय इनकम फॉर द करंट ईयर। सो आई विल क्रेडिट डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड बाय 221,600 एंड लास्ट ईयर मैंने उसको रीबेट में क्रेडिट किया था। नाउ आई विल डेबिट। दोज हु आर गेटिंग कंफ्यूज, डोंट वरी, जब भी मैं थर्ड एंट्री में आऊंगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नरेशन being last year's rebate recorded as current year's income. Narration you can write in your own word, no problem. Being last year's income recorded, last year's rebate recorded as current year's income. Got it guys? Now जो मैंने तुमको बताया था वन ऑफ द मेन ट्रांजैक्शन, बैंक के लिए डिस्काउंट इज एन इनकम। पहले उनको बिल परचेज करना पड़ेगा। अभी देखो लोग ने क्या बोला है, बिल डिस्काउंट एंड परचेज टोटल अमाउंट इज 1,37,05,000, 1,37,05,000। नाउ दिस विल हैपन थ्रू आउट द ईयर। सो थ्रू आउट द ईयर तो उसकी एक कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होगी। So what we will do? We just put a question mark for presentation because this takes place throughout the year. Now we are doing from bank point of view. बैंक कस्टमर से बिल परचेज करेगा, तो परचेज करेगा तो बिल आएगा। So my entry will be bill discounted and purchase account debit, that is 1,37,05,000, bill discounted and purchase account debit 1,37,05,000। बैंक के लिए डिस्काउंट विल बी एन इनकम एंड फॉर दैट फर्स्ट दे हैव टू पे द कस्टमर द मनी। सो पैसा बाहर जाएगा, बैंक भी पे करेगा, बैंक के भी बैंक अकाउंट होंगे। सो टू बैंक अकाउंट, लेकिन मुझे अमाउंट नहीं पता, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। नाउ ये टोटल जो बिल डिस्काउंट किया उसमें मेरी इनकम कितनी है? डिस्काउंट रिसीव दे हैव गिवन मी टू डिस्काउंट ऑन bill discounted account
that is given in the question 1056 650. To discount on bill discounted 1056 650. That means जो बैंक ने 1,37,05,000 के बिल डिस्काउंट किए उसमें से उनकी डिस्काउंट की इनकम 1056 650 है. So to earn this 1056 650 डिफरेंस बैंक को कस्टमर को पे करना पड़ेगा. अगर मैं कस्टमर हूं मुझे पैसा एडवांस में चाहिए तो बैंक देगा. सो 137 करोड़ 5,000 minus 1056 650 gives you 126 48 350. So bill discounted and purchase account debit 1 crore 37 lakh 5,000 to bank account the difference and to discount on bill discounted 1056 650. ये 126 कैसे आया? The difference between the two. Narration very simple. Being bill discounted during the year, or you can say being bills discounted during the year. Being bill discounted during the year. Clear guys? Now listen very carefully. हमने ये कैलकुलेट क्यों किया? क्या था ये? रीबेट. What is rebate? That part of discount income which doesn't belong to the current year, it belongs to the next year which is yet to come. Now see the logic. मेरी करंट ईयर की डिस्काउंट इनकम जो मैंने बिल डिस्काउंट किए थे वो है 1056 650. नाउ ये 1056 650 में से 564,059 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर विच इज येट टू कम. तो ये नेक्स्ट ईयर जो अभी तक आया नहीं है उसकी इनकम है, इसमें इंक्लूडेड है. सो करंट ईयर की इनकम नहीं है. सो अगर करंट ईयर की इनकम नहीं है सो रिमूव इट फ्रॉम ईयर. सो व्हाट यू विल डू? दिस विल नाउ बी ऑन द लास्ट डे 31st March 24. नाउ अंडरस्टैंड दिस एंट्री. बाद में अगेन मैं कोरिलेट करूंगा इससे. डिस्काउंट क्रेडिट है 1056 650, उसमें से 564,059 is not for the current year. So discount on bill discounted account debit कितना? ये जो कैलकुलेट किया 564,059. Discount on bill discounted account debit 564,059. Getting it? ये करंट ईयर का डिस्काउंट है जो मैं ट्रांसफर करूंगा रीबेट में. व्हाट इज द हेडिंग? रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. सो आई विल क्रेडिट टू rebate on bill discounted account, that is 564,059 to rebate on bill discounted account 564,059. Getting it? Let's write a narration, then we will see. Being rebate on bill discounted adjusted. Being rebate on bill discounted adjusted. क्लियर गाइस? सी देखो मैं वापस रिपीट करता हूं. ये जो मेरी डिस्काउंट की इनकम है 1056 650, ये जो मेरी डिस्काउंट की इनकम है 1056 650. फ्रॉम दिस 1056 650
564 belongs to the next year which is yet to come. So I will debit discount डेबिट करके उसको मैं रीबेट में ट्रांसफर करूंगा. नाउ गाइस लिसन, ये मेरी नेक्स्ट ईयर की इनकम है. सो व्हेन आई गो टू द नेक्स्ट ईयर, दिस हैज टू बी द इनकम ऑफ द करंट ईयर. सो ये जो फर्स्ट एंट्री है वो इसका रिवर्सल है. अगर ये जर्नल मैंने लास्ट ईयर बनाया होता तो ये एंट्री का अमाउंट होता 221,600. सो आई हैव रिवर्स दैट. व्हेन आई गो टू द नेक्स्ट ईयर, आई विल रिवर्स दिस विद दिस अमाउंट. ये 221,600 मुझे लास्ट ईयर मिला था. देखो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है रीबेट ऑफ लास्ट ईयर. सो दिस इज द लॉजिक. So this entry, when I go to the next year, on the first day of the next year, I will reverse it. On the first day of the next year, I will reverse it, and that is the logic of passing the first entry. Getting it? I'm sure तुम लोग को थोड़ा बोरिंग लगता रहेगा, but please understand ये वीडियो YouTube पे भी ओपन है. जितनी बार देखना है उतनी बार देखो टिल द टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड. एंड अगर फिर भी कंफ्यूजन है, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी. गेटिंग इट गाइस? सो ये हो गई 3 एंट्रीज. नाउ एज आई टोल्ड यू, हमें पीएनएल बनाना है. FIJC का बेसिक. एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम आर टू बी क्रेडिटेड और डेबिटेड टू पीएनएल. डिस्काउंट इज माय इनकम, सो डिस्काउंट इनकम हैज टू गो टू पीएनएल. So my last entry for this particular sum. आगे जाके there will be few more entries, but I am not getting into that today. Now see, discount is my income, correct? Check करो, what is the net income? So what you will do? Add the credits of discount. ये मेरी current year की income है. So 221,600 plus 1056,650 minus 221,600 plus 1056,650. From that minus the debit 564,059. So my current year का discount income is 714,191. Let me check once again. 221,600 plus 1056,650 minus 564,059. So 714,191. I'll repeat, guys. 714,191 कहां से आया? Add the credits of discount minus the debit of discount. Clear? And this is my final income. Discount credit है minus debit. So I will debit discount. So after this, my discount account gets nullified. You will see in the journal. So discount on bill discounted account debit, and this is my income of the current year, which I will credit to PNL. So to PNL 714,191 being discount on bill discounted during the year transferred to PNL account. Transferred to PNL account. Okay, got it? So देखो, डिस्काउंट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, एंड में जो भी डिस्काउंट का बैलेंस है इट हैज गॉन टू पीएन. प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए लेट्स टेक द टोटल. $1,52,04,850. Okay, let's see, 221,600 total
total 152,04850. Got it, guys? So this was your journal. As I told you, three parts. First, calculation of rebate. Second, journal. And now we will take the ledger account. Ledger account is based on journal only. You have to just do basic FYJC का posting. खाली एक balance का point है. You see that I just changed the angle of the mobile. Okay, guys, you will prepare these two accounts. What have been asked, and they ask you only these two accounts: rebate on bill discounted and discount on bill discounted. Around 6 lines का ledger account. Date particulars JF amount, date particulars JF amount, FYJC का basic. Got it? Now guys, be ready with these two accounts. आप वीडियो पॉज कर दो, 6 लाइन का अकाउंट बना दो. What we are supposed to do is post the entries related to rebate and discount, and क्वेश्चन में जो ओपनिंग बैलेंस दिया है वो ओपनिंग बैलेंस पहले लिखना है. बिकॉज सी, जस्ट सी द क्वेश्चन. डिस्काउंट में बैलेंस होता नहीं है, बट रीबेट, व्हाट आई टोल्ड यू, रीबेट इज नथिंग बट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस. सो देखो 31 मार्च 23 रीबेट का बैलेंस है 221,600. वी स्टार्टेड द फर्स्ट एंट्री बाय रीबेट, बाय पास रिवर्सिंग द एंट्री ऑफ द प्रीवियस ईयर. डिस्काउंट जो भी है क्रेडिट माइनस डेबिट पीएनएल में गया, सो डिस्काउंट का बैलेंस कभी भी नहीं आएगा. सो व्हेन यू स्टार्ट द अकाउंट, there will not be any opening balance in discount, but see the second part of the question. Rebate ka balance on 31st March 23. Rebate is a liability because you have received in advance. So come to the credit side. First day of the year, जो ये डेट पास लिखा हम लोग 1st April 23, by balance brought down कितना है 221,600. By balance brought down 221,600. You cannot proceed further without writing the balance. So when you are preparing ledger account for this chapter, in this first part, only two ledger accounts, always write rebate ka opening balance. Now, after writing rebate ka opening balance, now take the posting from the journal. बट ध्यान रखना कौन से अकाउंट बना रहे हो, रीबेट एंड डिस्काउंट. सो जो भी एंट्रीज में रीबेट और डिस्काउंट है वही आएगा. लेट्स टेक वन बाय वन. फर्स्ट एंट्री रीबेट टू डिस्काउंट. सो रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग को डेबिट किया. सो कम टू द डेबिट साइड ऑफ रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू discount on bill discounted account, that is 221,600. rebate debit किया है, so debit side of rebate to discount. Now we are preparing discount account, तो इसका corresponding entry 1st April 23 by rebate on bill discounted account 221,600. By rebate on bill discounted account 221,600. Clear? हो गया first entry. Next, bill discounted and purchase, we are not preparing that account. Bank, we are not preparing that account. Discount, yes, क्या किया है, क्रेडिट किया है. कितना 1056,650. कम टू द क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट, डेबिट क्या किया है, बिल डिस्काउंटेड. डेट इज नॉट देयर, सो पुट अ क्वेश्चन मार्क. सो बाय बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस अकाउंट
1056 650. Buy bill discounted and purchase account 1056 650. नेक्स्ट थर्ड एंट्री, डिस्काउंट डेबिट किया, रीबेट क्रेडिट, सो दोनों में जाएगा. फर्स्ट डिस्काउंट डेबिट, सो कम टू द डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट टू rebate on bill discounted account, that is 564059. गाइस मेरे पास स्पेस थोड़ा कम था, तुम लोग एक ही लाइन में लिखना. ओके, टू रीबेट में आएगा 31 मार्च 24, बाय डिस्काउंट ऑन bill discounted account 564059. 564059. And the last entry, PNL नहीं बना रहे बट डिस्काउंट बना रहे, 31 मार्च 24 to profit and loss account 714191. To profit and loss account 714191. To profit and loss account 714191. Got it? First, write the opening balance of rebate, do the posting. Now you balance. Now see a very interesting thing. Rebate को बंद करते, क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है, 221,600 प्लस 564,059, 785,659, 785,659 माइनस 221,600, कितना डिफरेंस आया देखो, 564,059. सेम थिंग. नेक्स्ट ईयर का इनकम करंट ईयर में मिला, तो इसको हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे. देयरफॉर हियर यू विल राइट 31 मार्च 24 टू बैलेंस कैरिड डाउन. देखो हाउ वी स्टार्टेड ओपनिंग बैलेंस. सो जब भी मैं नेक्स्ट ईयर का रिबेट बनाऊंगा, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा. सो इन शॉर्ट, rebate will have a balance and that balance has to be equal to our rebate what we calculated. Got it? And discount को बंद करो. अभी देखो बिना कैलकुलेट के मैं बोल रहा हूं तुमको, डिस्काउंट टैली हो जाएगा. क्यों? बिकॉज यहां पे हमने एट द क्रेडिट माइनस डेबिट किया, जो भी डिफरेंस था पीएनएन में डाल दिया, मतलब डिफरेंस आएगा ही नहीं, जो भी डिफरेंस था पीएनएन में डाल दिया. चेक कर लो. Let's take the total. 564,059 plus 714,191 gives you 127,8250. 127,8250. Yes. So discount account tallies and rebate में आया ओपनिंग बैलेंस. डिस्काउंट टैलीज एंड रीबेट में आया ओपनिंग बैलेंस. गॉट इट गाइस? थोड़ा लंबा सेशन हो गया, मैंने बोला ये सेशन जाएगा बड़ा. गेट दिस सम प्रॉपर्ली. 80% of first part of this chapter is done if you get this concept. So guys, we started with final accounts of banking companies today. I gave you the basic brush up and we did the first part ka sum, that is bill discounted. Hope the concept is clear. As I told you, this video is open on YouTube. You can watch multiple times. जितनी बार देखना है देखो, रिवाइंड फॉरवर्ड करके जितनी बार देखना है देखो. जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है उसको ज्यादा वापस रिपीट कर करके देखो. And after that also, if you don't get, please feel free to connect with me. I'll give you the brush up. Now, वीडियो को ज्यादा ही एक्सटेंड हो गया. I won't waste much time. I wind up here.
For students who are doing this chapter with me, see you all in the next class. And as far as open videos on YouTube is concerned, the next open video on YouTube for this chapter will be on the second part, that is income recognition. What is that? We will see when I upload the video. Till then, take care guys, and please do revise this part properly. Again repeat कर रहा हूँ, ये सम आ गया, 80% of the first part is done. That's it. Take care guys.